Assalam Alaikum dear brothers and sisters, I am Mohammad Usman Ahmed Qureshi and you are watching Usman Ahmed Reaction। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अपने घर वालों के साथ ऐसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है कि वाई देयर आर ओनली मेल प्रॉफिट्स इन इस्लाम। इस वीडियो में डिस्कस किया वो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने किया है, तो मज़ीद टाइम जाए के बगैर अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। इसके अलावा अगर आपने हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो नहीं किया तो आप वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मज़ीद टाइम जाएगी बगैर अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। Assalam O Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Click to subscribe, believing beings, and press the bell icon to get notified about new videos. Good evening, sir. My name is Naveen Kumar. I am from India. I am working in Qatar Fertilizers. Actually, I was living here from 3 years. After coming here, I was little bit know about Islam. Before that, I don't know anything. So from the colleagues, I learned this is the Islam, like this religion. So I read the full Quran. I came to know that Allah sent messengers only males, but not send any females like this. Only the messengers are the males. But I think the Hindus, what we are following, maybe Ram, Krishna, all are messengers. And what about the goddesses, Durga, Parvati, what are all these things? So we are going in the wrong way, or we have to revert back. If we are revert back, why we are giving so many donations to the temples? Why these temples are there? What is the existence? Brother asked a question that in Islam, he came to Qatar, learned about Islam, and he knows there are many messengers in Islam, but there aren't any female messengers. In Hinduism, there are goddesses. Point number one, as I told you, in Hinduism, there's only one God. God. There are no goddesses. In Islam, the word Allah has got no gender. Neither male, neither female. Allah is uncomparable. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. But because in Arabic language, by default, we say Kul huwa Allahu ahad. Say He is Allah. Because in Arabic grammar, when we use, there are two types of gender, male and female. For female, there are certain rules and regulations. If it's feminine by nature, like mother, ummun, by the sister, uktun, it becomes female. Number two, if it ends with ta, like the watch, sa'atun, it becomes female. There are rules and regulations. Or if it's in pairs, ainun, eyes, yadun, hands, it becomes feminine. All these do not match. So by default, we say huwa. Otherwise, Allah subhanahu wa ta'ala has got no gender. In Hinduism, there is God and goddesses. That is the reason God is not the appropriate word. Because you can play mischief with the English word God. We prefer calling him Allah. Why? You cannot play mischief with the Arabic word Allah like you can do with the English word God. If you add S to God, it becomes gods, plural of God. There is no plural of Allah, Kul Wallahu Ahad. If you add D-E-S-S to God, it becomes goddess, meaning a female God. There is no male Allah or female Allah in Islam. If you add father to God, it becomes Godfather. There is nothing like Allah, Father, or Allah in Islam. That is the reason we prefer calling Allah by the Arabic word Allah instead of the English word God. Do you understand? Yeah. In Hinduism, you have God, goddesses. Yeah. That's the reason it is not, we don't agree with it. Regarding messengers, there's a difference between God and difference between messengers. Yes. Don't merge up both. Yeah, I know. You're merging here, there, and then correct. So, first of all, in God, the Arabic word Allah is pure. All the other words can get manipulated. In terms of messengers, in Islam we believe that Almighty God has only chosen men to be messengers. That does not mean females are inferior. There are mentions of 4 great females in the Quran and the Hadith. Talks about Maryam alayhi salam, Mother Mary. The Quran says in Surah Imran, chapter number 3, verse number 43,
وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ, and behold the angel said, O Mary, إِنَّ اللَّهَ اسْتَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاسْتَفَاكِ مِنَ الْعَالَمِينَ, that Allah has chosen thee and purified thee above the women of all nations. That means Allah has purified her. It talks about the other great women. For example, Bibi Khatija, may Allah be pleased with her, who was the wife of the Prophet. It talks about Asya in Surah Tahrim, chapter number 66. Tahrim was the wife of Moses. Was the wife of Pharaoh. So the Quran talks about great ladies. But why did Allah not choose women to be messengers? There are many reasons. To say they were not pure, I've given you examples. Yes? 25 men are mentioned, even 4 women are mentioned. Correct? Now, why? Because the responsibility of messenger is very high. For the woman, Allah has upgraded her because she bears children. Now, if you have to bear children, then give the responsibility of taking care of the leader of the house, difficult, taking care as the head of state, difficult. So Allah didn't want to put on them additional burden. If you are the messenger, you have to lead the salah also. You have to lead the prayer. How can a woman lead the prayer? In Islam, a woman cannot lead a congregation of men. So because of various these reasons, Almighty God in His divine wisdom did not choose women to be messengers of Allah. He didn't want to overburden them. He gave them some facility. That's the reason He has kept only men as messengers. Hope that answers the question. If I'm having any doubts, so how can I get the correct answers? Can you give me any email so that I can mail to that If anything with comparative religion, you can write to me at islam@irf.net. islam@irf.net. Or you can go to Islam Q&A. Islam Q&A is a good site which gives replies. Anything with comparative religion, because we receive more than 1,000 emails a day. And believe me, it becomes difficult. We have more than 500 staff working. बिल्कुल नाजरीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो मेल्स हैं उनको मतलब अपना सेलेक्ट किया कि वो प्रॉफिट्स होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो फीमेल्स हैं वो क्या हैं, वो इन्फीरियर हैं। वो इस वजह से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको ओवर बर्डन नहीं किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको फैसिलिटेट क्यों? क्योंकि वो चाइल्ड बेयर करती है। इसके बाद जो है कि उसके बाद उसकी ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने आप में। और फिर उसके बाद इस पे कि आप जो है मतलब हेड ऑफ़ द स्टेट हों, उसको आपने संभालना है। फिर इसी तरह इस्लाम में जैसे कि जो प्रॉफिट्स होते हैं उनको जो प्रेयर्स हैं वो उनकी भी इमामत करानी होती है, उनको भी लीड करना होता है। लेकिन क्या है, इस्लाम में जो है आप जो फीमेल जो है वो मतलब नमाज की इमामत नहीं करा सकती या सलाह की इमामत नहीं करा सकती। तो देयर आर मैनी रीज़न्स हैं। लेकिन जैसे कि बताया गया कि इसका ये मतलब नहीं कि वो प्योरीफाई नहीं होती या मतलब इन्फीरियर होती हैं। क्यों? क्योंकि कुरान पाक में जहाँ 25 मैसेंजर्स का ज़िक्र है, वहीं पे 4 जो आला ख़वातीन हैं, जो अफजल ख़वातीन हैं, उनका भी ज़िक्र है। और कुरान में तो हज़रत मरियम यानी सूरह मरियम के नाम से, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के नाम से तो पूरी सूरत मौजूद है। तो बेसिक रीज़न क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको ओवर बर्डन नहीं किया, बल्कि फैसिलिटेट किया है। इस वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़ीमेल्स के बजाय जो मेल्स हैं उनको अपनी जो यानी कि डिवाइन विजडम है उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये जो अपने जो मेल हैं उनको प्रेफर किया कि वो प्रॉफिट्स होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है तो लाजमी इसको दूसरों तक फैलाएं ताकि वो भी हक़ाइक़ से जान सकें और उसको फिर जो ट्रुथ है उसको एक्सेप्ट कर सकें। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ अपनी कीमती राय का इज़हार भी लाजमी करें। बहुत जल्द आपसे एक दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।